Hello viewers, the question is a parallel plate capacitor shown in figure made of circular plates each of radius r equals to 6 centimeter has a capacitance C is equal to 100 picofarad. The capacitor is connected to a 230 volt AC supply with angular frequency of 300 radians per second. In part A, what is the RMS value of the conduction current? Part B, is the conduction current equal to the displacement current? Part C, determine the amplitude of B at a point 3 centimeter from the axis between the plates. So the problem is based on this particular capacitor energized by an AC source. Now let us solve this problem. So for part A, what is the value of RMS value of conduction current? So in this, we have to find out the RMS value of the conduction current. We know that the RMS value of current is equal to RMS voltage upon the capacitive reactance. Since there is no resistance or inductance in this particular circuit, only the pure capacitor is given. So that's why we have to use the capacitive reactance here. So putting the respective values, so Vrms upon X of C, which is the capacitive reactance, is given by 1 upon omega C, where omega is the angular frequency and C is the capacitance. So this comes out to be Vrms into omega C. Putting the respective values, Vrms is 230, omega is given as 300 radians per second, and the value of C is given as 100 picofarad. It means that 100 into 10 raised to the power minus 12. So after solving this, this value comes out to be 6.9 into 10 raised to the power minus 6 ampere, which can also be written as 6.9 microampere. So this is the value of the conduction current. This is the answer of the part A. तो यहाँ इस प्रॉब्लम में हमें कैपेसिटर दिया गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है. इसमें इस कैपेसिटर के लिए, इस सर्कुलर प्लेट्स के लिए रेडियस दे रखी है, कैपेसिटेंस दे रखी है, इसे एनर्जाइज किया गया तो 230 वोल्ट एसी सोर्स से, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 300 रेडियंस पर सेकेंड. पहले पार्ट में हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट. तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट बराबर होगी Vrms अपॉन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है 1 अपॉन ओमेगा सी. ओमेगा सी जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये जाएगा Vrms इंटू ओमेगा सी. Vrms की वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे रखी है 230 वोल्ट सोर्स की वैल्यू. ओमेगा की वैल्यू 300 रेडियंस पर सेकंड गिवन है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है 100 पिकोफैरड यानी 100 इंटू 10 पावर माइनस 12 फैरड गिवन है. तो इस तरह से सॉल्व करके हम वैल्यू निकालते हैं तो आती है 6.9 इंटू 10 पावर माइनस 6 एम्पियर्स, जिसको कि हम माइक्रो एम्पियर में भी लिख सकते हैं. इट इज 6.9 माइक्रो एम्पियर्स. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड प्रॉब्लम पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, द बी पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. Now in the B part of this problem, it is asked whether the conduction current is equal to the displacement current. Now the conduction current is the current which is flowing in the wire to charge this capacitor, and the displacement current is the current in between the plates of the capacitor. This is due to the change in the electric field in between the plates of the capacitor. So we know this fact that the displacement current is equal to the conduction current. Now let us prove this also. So we have to prove this also. So ID, which is the displacement current, is given by the formula epsilon naught d phi by dt, or we can say that d phi sub e by dt. Now phi sub e, phi subscript e, is the electric flux. So it is equal to, the displacement current is equal to epsilon naught into the rate of change of electric flux. Now we know that the electric flux is given by this formula phi is equal to EA, and we also know that E is equal to sigma upon epsilon naught, where sigma is the surface charge density. So the sigma upon epsilon naught into A. Now sigma is equal to Q upon A. So Q upon A into epsilon naught into A. This A cancels with this A. So this value comes out to be Q upon epsilon naught. So the electric flux is equal to the charge divided by the permittivity of free space. Now putting this value in this equation, we get
epsilon naught d by dt of q by epsilon naught. Now this epsilon naught is a constant, so we can pull it out from the differential. So this is epsilon naught upon epsilon naught dq by dt. Now this epsilon naught cancels with this epsilon naught, and dq by dt is the rate of change of charge, which is equal to the conduction current. So in this way we can say that the displacement current is equal to the conduction current. So this is the proof for the displacement current equal to the conduction current. This is the answer of the second part of this problem. Now यहाँ पे हमने जो है सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व किया. इसमें पूछा गया है कि क्या कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होती हैं. सो द आंसर इज यस, ये दोनों बराबर होती हैं. इसको हम प्रूव कर सकते हैं. आई डी इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, जहाँ की फाई हमने लिया है फाई सबस्क्रिप्ट ई, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. नाउ फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया. एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी चार्ज पर एप्सिलॉन नॉट. इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे फाई के प्लेस पे, और एप्सिलॉन नॉट को डी बाई डी टी से बाहर ले लेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एक फिक्स क्वांटिटी है. एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें यहाँ मिलेगा डी क्यू बाई डी टी. डी क्यू बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, जिसको कि हम कहते हैं कंडक्शन करंट. तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट जो है वो बराबर आती हैं. Now let us move to the C part of this problem. Now in the C part of the problem, we have to determine the amplitude of magnetic field at a point 3 cm from the axis between the plates. Now this is the situation that this is a circular, these two are the circular plates, and the radius of these circular plates is given as 6 centimeters. So there is a magnetic field inside this particular plates. Basically the value of the magnetic field at a point which is suppose a certain distance away from the axis, this is the axis basically, which is passing perpendicularly through the plates. Now if we choose a certain point which is at a certain distance, for example the distance small r away from the axis, and the radius is suppose capital R, the radius of the circular plate is capital R, and suppose we are calculating the magnetic field at a point which is suppose small r distance away from the axis, then the magnetic field is given by this formula mu naught. This is mu naught small r I upon 2 pi capital R square. Now here we have to calculate the maximum amplitude of the magnetic field. So the maximum amplitude of the magnetic field is given by the corresponding maximum current. So the maximum of the peak current is given by square root 2 into IRMS value. Now the IRMS value which we have calculated in part A was 6.9 into 10 power minus, this was 6.9 into 10 power minus 6 amperes, and this is multiplied by root 2. Root 2 is nearly 1.414. So this is the value of I which you have to put here. Now first of all mu naught is equal to 4 pi into 10 raised to the power minus 7. This multiplied by small r. Small r is basically the distance of the point from the axis at which we have to calculate the magnetic field. So this is given as 3 centimeters. So 3 into 10 power minus 2 meters. This multiplied by this I, which we have to put later on, and 2 pi into 6 into 10 power minus 2 whole square. Now putting this value of I here, first of all we have to cut some things. For example, this cancels with this thing. And after solving this, this value comes out to be nearly 1.626 into 10 raised to the power minus 11 Tesla. So this is nearly equal to 1.63 into 10 raised to the power minus 11 Tesla value. So this is the value of the magnetic field at a distance 3 centimeter away from the axis of this capacitor. तो यहाँ पे हमसे थर्ड पार्ट में सी पार्ट में पूछा गया है determine the amplitude of magnetic field, that is B, at a point 3 centimeter from the axis between the plates. So इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है म्यू नॉट स्मॉल r इंटू आई अपॉन 2 पाई r स्क्वायर. यहाँ पे स्मॉल r वो वैल्यू है जिसपे हमें इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. स्मॉल r बेसिकली वो दूरी है एक्सिस या एक्सियल लाइन से उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. और कैपिटल आर इसमें इस फॉर्मूले में जो है 2 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर. तो कैपिटल आर है बेसिकली सर्कुलर प्लेट्स का रेडियस. तो हमने यहाँ पे इसकी जगह रेडियस यानी 6 सेंटीमीटर इस पे इस क्वेश्चन में पुट करना है.
और उसे मीटर में कन्वर्ट करके पुट करना है 6 × 10⁻²। और आई जो हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, तो उस केस में आई जो होगा वो होगा √2 × IRMS वैल्यू। IRMS वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 6.9 × 10⁻6। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √2 की वैल्यू जो कि है 1.414 नियरली इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है लगभग 1.626 × 10⁻11 टेस्ला, जैसे हम कह सकते हैं नियरली 1.63 × 10⁻11 टेस्ला। So this is the final answer. Hope you understand the explanation. Thank you.